Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class of Applied Econometrics, I'm going to start a new topic which is the metrics approach in the linear regression model. Well, I'm making one assumption in this class that the students who are watching this lecture, they are comfortable with the meaning of regression model, linear regression, simple linear regression, multiple linear regression, the assumptions of classical linear regression model, OLS estimation, Gauss Markov theorem and related concepts. अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो पहले आपको, क्योंकि आपने पिछले कोर्स में इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में टॉपिक्स पढ़े थे इसलिए आपको आने चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले उसको उन टॉपिक्स को एक बार आपको देखना पड़ेगा। जो हमारे पास स्टूडेंट सब्सक्राइब्ड है उनके अकाउंट के अंदर हमने अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स से पहले सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के लेक्चर्स को लगा दिया है as a review of previous year topics, previous semester topics, as a review of topics of introductory econometrics। तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। वो इसलिए लगाएं कि अगर आपको याद नहीं है सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, तो आप एक बार उन लेक्चर्स को देख लेंगे, और अगर आपको याद है तो उनको आप बाईपास करके सीधा मैट्रिक्स अप्रोच से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, नया कुछ नहीं है। बस अब तक हमने जो रिग्रेशन को पढ़ा था, अब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमारे कोर्स का पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिप्रेजेंटेशन of not simple, rather multiple linear regression. So I won't write simple or multiple, I'll write linear regression model. Representation of linear regression model in matrix form. Then the assumptions which we took as we took for formation of the model, which were the classical linear regression model assumptions, CLRM assumptions, वो दोबारा से यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। CLRM assumptions in matrix form. Then we have to study the ordinary least square estimation, OLS estimation, in matrix form. Once we have done the OLS estimation, then we will study a new concept, and that is the variance covariance matrix of beta cap, regression coefficients जो हैं beta, variance covariance matrix of beta cap. Then we will represent the Gauss Markov theorem in matrix form. Gauss Markov theorem. After that, we have studied this thing: explained variation, unexplained variation, total variation, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अनोवा टेबल, उन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो पढ़ेंगे। विल स्टडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड अनोवा टेबल in matrix form. And we will also study the correlation matrix. These are all the concepts which we have to discuss in the topic of matrix approach to regression model. And after this we have to solve the numerical problems as well. We have to do some proofs तो साथ में करते जाएंगे, मगर कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ सॉल्व करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं हमारे पास, हम कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर के न्यूमेरिकल्स नहीं लिखते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं आपके,
वही क्वेश्चंस आपको हम करके दिखाते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा मैट्रिक्स अप्रोच का। इसमें ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं प्रूफ्स के, ये सब प्रूफ्स के क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको हम करके दिखाएंगे। ये एंड में होगा जब आप सब कंसेप्ट सीख चुके होंगे। उसके बाद बीच में कुछ क्वेश्चंस करता रहूंगा साथ साथ आपके साथ, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जब आप पूरा सिलेबस एक बार के लिए कर चुके होंगे तो, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है। ऑब्वियसली एक क्लास में सारा काम नहीं हो सकता है। आज का मेरा जो एजेंडा है, जो मेरा टारगेट है, वो ये है कि आई वांट टू डिस्कस these two concepts in today's class. मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड assumptions of CLRM आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, एंड इट इज द matrix representation of a k variable regression model. Matrix representation of a k variable regression model. We have a k variable regression model, and we have to learn how can we represent that in the matrix form. Suppose first of all let us take the function. The population regression function is the PRF. The population regression function is yi is equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus up to beta k xki plus the error term ui. Now what kind of function is this? This is a linear k variable, I should write k variable linear regression model. This is a linear regression function because all the parameters beta 1, beta 2, beta 3, they are in linear form, and it has k minus 1 explanatory variables, and it has one explained variable. So this model has k minus 1 regressors, explanatory variables, and it has one explained variable, regressant. Okay, right? So here beta 1 beta 1 is the intercept term, beta 2 is the partial slope term, so as beta 3, beta 4 up to beta k, they all are partial slope terms. We know all these things. Now if we take n samples, so what do we get? If we take n samples for this, so we get the equations y1 is equal to beta 1 plus beta 2 x21, x2 for first sample, plus beta 3 x31 plus beta k xk1 plus u1, and for second we get y2 is equal to beta 1 plus beta 2 x22 plus beta 3 x32 plus up to beta k xk2 plus u2. In the same way I can take n sample values. So if we take n values, what do we get? Yn is equal to beta 1 plus beta 2 x2n plus beta 3 x3n plus beta k xkn plus un.
Now, how can we write this information in the matrix form? This is the first thing. See, I can clearly see that the left hand side here, this thing is a matrix, rather it is a column matrix which has n rows and only one column. So I can write it as, if I shrink it a bit to make it more comfortable. So this can be written as y1, y2 up to yn. And what about this? Can you visualize how can we represent this information in the matrix form? Well, actually, this information is the product of two matrices. One is the variable matrix and the other is the coefficient matrix. See, if I write in matrix form, I can write it like this: 1, x2 1, x2 2 up to xk, sorry, 1 x2 1, x3 1. I made a mistake here. x3 1 up to xk1. And for second row, 1, x2 2, x3 2 up to xk2. And this thing can go on for n values: 1, x2 n, x3 n up to xkn, being multiplied by beta 1, beta 2 up to beta k. Now if you look carefully, if I multiply this first row with this column, what do we get? 1 into beta 1 is beta 1, plus x2 1 into beta 2 is beta 2 x2 1, plus x3 1 into beta 3 would be beta 3 x3 1, plus up to xk1 into beta k would be beta k xk1. Similarly, if I multiply second row with the column, I get the second row in the above information, and so on. And this last set is basically, this last set of information is also a column matrix of the error terms. I can write it as plus u1, u2 up to un. And as we know, we write the order of the matrices. So you can clearly see the first dependent variable matrix y. It has an order of because it has only one column and n rows, so its order is n cross 1. And if you see this variable matrix, now how many columns does it have? कितने columns है इसके पास? I remember when I used to teach this thing in the class. अभी तो recording कर रहा हूँ, तो जब क्लास में पढ़ाता था तो different voices आती थी. कुछ बच्चे बोलते थे सर k columns हैं और कुछ बोलते थे k plus 1 columns हैं. आप सोचिए आपको क्या लगता है? What do you think? कितने columns हैं? अपने मन से पूछिए एक बार. और मैं अभी आंसर बता रहा हूँ आपको. आप पूछिए एक बार. आपको क्या लगता है? k है कि k plus 1 है? आइए देखते हैं कितने columns हैं. ये हमारे पास काउंटिंग 2 से स्टार्ट हो रही है. 2, 3, 4 अप टू k. यानी दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज kth कॉलम. सो वी हैव k कॉलम्स. तो बच्चे कहेंगे सर फिर k plus 1 लोग क्यों बोलते थे? वो ये सोचते थे कि बिकॉज हमारे पास k तो x वेरिएबल्स है और एक एडिशन कॉलम है, तो k plus 1 कॉलम्स हो गए. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो x वेरिएबल्स है वो x2 से स्टार्ट हो रहे हैं, x1 से हमने स्टार्ट नहीं किए. इसलिए बेसिकली वी हैव k कॉलम्स. और रोज कितनी है, कितने वैल्यूज हैं हमारे पास? x21, x22, x23 up to x2n. We have n rows. So here we have n rows and k columns. So the order of this matrix, variable matrix, is n cross k. And this coefficient, regression coefficient matrix beta, this matrix it has k rows
beta 1, beta 2 up to beta k. It has k rows and it has one column, so its order is k cross 1. And this matrix of error terms, it has u1, u2 up to un, n rows in one column, so its order is n cross 1. मैंने शायद यहाँ प्लस लिख दिया गलती से, ये k cross 1 है. आपको याद होगा, we can multiply two matrices only if the columns of second matrix are equal to number of rows of first matrix. So columns of second are equal to number of rows of first, so we can multiply them. So let me write them in this form. Y has the order n cross 1 is equal to, we call this matrix as matrix X. X has the order n cross k into beta has the order k cross 1 plus u has the order n cross 1. And one thing which I was discussing is if you multiply, we have x and beta. X has order n into k and beta has order k is to 1. If you multiply, we have to check that the number of columns of first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. And once you multiply, the resultant has order such that the number of rows are from the first matrix and columns are from the second matrix. So x cross b, the resultant matrix would have the order of n cross 1. And that is why, because it has order of n cross 1, we can add it with the error term, because we can add only those matrices which have same order. ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब क्योंकि क्लास में नहीं है, आप कोई बच्चे मन में सोच सकते हैं सर अब इनका ऑर्डर अलग है तो इनको ऐड कैसे करेंगे. सर ऑर्डर अलग नहीं है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और बीटा को, तो एक्स बीटा मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स बीटा मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर आ रहा होगा n क्रॉस 1, इसलिए हम उसको u से ऐड कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर इतनी बात. So first of all, if we have the given function, the given linear regression model, we can write it in matrix form in this way. This is the matrix representation of a linear regression model. This is the matrix representation of a linear regression model. तो पहली बात हमको यही सीखनी थी कि क्या है matrix representation. क्लियर होगी बात आप लोग को. वेल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर एग्जाम में क्या ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने को आएगा, तो मैं कहूँगा एग्जामिनेशन में जनरली वो आपको OLS के क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, या ये जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं CLRM के अजम्पशंस, उनको प्रूव करने को, उनमें से एक या एक से ज़्यादा अजम्पशंस को प्रूव करने को बोल सकता है, और या फिर गॉस मार्कोव को प्रूव करने को बोल सकता है मैट्रिक्स फॉर्म में. तो मैं अभी वो सब आपको करके दिखाने वाला हूँ. आज की क्लास में CLRM की बात तक रुकूंगा, उसके आगे फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम चलेंगे. तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए है कि आपको आना चाहिए कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम मॉडल को लिखते कैसे हैं. एग्जामिनेशन में इसको पूछेगा, इसका चांस बहुत कम है. ठीक है, अब हम बात करते हैं CLRM assumptions की. क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, CLRM assumptions. आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये CLRM की assumptions तो पहले भी पढ़ कर आए हैं, तो क्या अभी हम लोग कुछ और assumptions पढ़ने वाले हैं या वही assumptions हैं. तो assumptions तो वही हैं जो आपने पहले पढ़ी थी. assumptions में कोई difference नहीं है. there is no change in the assumptions, but we have to understand how to represent them in the matrix form. matrix form में उनका representation कैसे करना है, ये यहाँ पे हमको सीखना है. तो जो हमने अब से पहले पढ़ा था इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स के कोर्स में, वो जो अजम्पशन लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलर फॉर्म या स्केलर रिप्रेजेंटेशन. और आज हम पढ़ेंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. तो दो रिप्रेजेंटेशन हैं, जो एक हम पहले पढ़ के आए इसको बोलते हैं स्केलर रिप्रेजेंटेशन, और एक आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. एडवांटेज ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का कि हम एक से ज्यादा अजम्पशंस को एक साथ लिख सकते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऐसी है मैट्रिक्स की कि हम एक से ज्यादा अजम्पशंस को एक साथ लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं. अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले मेरे पास यहां पर है, आई एम राइटिंग स्केलर फॉर्म या स्केलर नोटेशन. and then I will take the matrix notation. Scalar notation and the matrix notation. Scalar and matrix. First of all, we assume that, हमने पढ़ा था वहां पे,
that the expected value of the error terms is 0. The expected value of the error terms is 0. या पढ़ कर आए, sorry. Sorry. The expected value of the error terms is 0. Expected value of error terms is 0. ठीक है, ये assumption हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे? हमारे पास एक एरर्स का कॉलम मैट्रिक्स है. We will say that the expected value of the column matrix is a null matrix. EU is a null matrix. ठीक है, बात वही है, लेकिन अब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. So I will write E of U is equal to 0, is equal to O, where EU and O are null matrices of order n cross 1. देखिए हमारे पास U है क्या? We have U as U1, U2 up to UN. So if I find E of U would be E of U1, E of U2 up to E of UN. And as we know that expected value of the error term is 0, so E of U is 0, 0, 0, n times 0. So that means the expected value of U is a null matrix of order n cross 1. n cross 1 का null matrix है. So EU is a null matrix of order n cross 1. ये हमारी जो स्केलर फॉर्म में assumption थी that the average value of the error terms is 0, उसकी मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन क्या है? The expected value of U matrix is a null matrix of order n cross 1. क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा. अब जैसे मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमने जो स्केलर फॉर्म में एक से ज़्यादा assumptions पढ़ी थी, हम मैट्रिक्स फॉर्म में उनको एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. कैसे? देखिए, आपने पढ़ा था कि देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन. एरर टर्म्स में कोई सीरियल कोरिलेशन नहीं है. मैं इसको 2A बोल देता हूं. देयर इज नो serial correlation, that is expected value of UI UJ is 0. ठीक है, ये पढ़ा था आपने. और आपने एक बात और पढ़ी थी और वो ये था कि जो एरर टर्म्स हैं दे आर होमोस्किडास्टिक. मैंने UIJ लिख दिया, UI UJ है, UI UJ is 0. आपने पढ़ा था क्या? एरर टर्म्स आर homoscedastic, that is E of UI square is equal to sigma square. यानी आप ये पढ़कर आए थे कि E of UI UJ is equal to 0 if I is not equal to J, is equal to sigma square if I is equal to J. ये हमने पढ़ा था. ये दो assumptions हमने पढ़ी थी. अब इन दोनों को हम एक साथ मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. एक साथ करते हैं रिप्रेजेंट, और उसके लिए हम यूज करते हैं एक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स of error term. So I can write it as second assumption in matrix form is expectation of U into U transpose is equal to sigma square into I. Yeah, U is the
column matrix of error terms which has order n cross 1, and U transpose is transpose of U, so it becomes a row matrix of order 1 cross n. Sigma square is the variance of error term. Sigma square is the variance of error term, and I is identity matrix. Of order n cross n. Now naturally you would ask a question, sir, how can I say that these two things which we mentioned on the left side as scalar notation are being represented by the single representation? How can I say like this? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि ये दोनों assumptions एक साथ यहाँ पर represent हो गई? जैसे मैंने कहा कि CLRM की assumptions को वो प्रूव करने को भी बोल सकता है, तो अगर उसने बोला तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा. क्या करेंगे उसमें हम? आइए दिखाते हैं आपको. जैसे मैंने आपसे कहा कि U हमारे पास क्या है? एरर टर्म है, एरर मैट्रिक्स है. तो U इज मैट्रिक्स ऑफ एरर टर्म, सॉरी. U is U1, U2 up to UN, and U transpose is a row matrix. U1, U2 up to UN. U has order n cross 1, and U transpose has order 1 cross n. Now if you multiply U with U transpose, U into U transpose, you will have U1, U2 up to UN multiplied by U1, U2 up to UN. Now आपने पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम क्या करते हैं? What do we do? We multiply first row with first column. So I get U1 into U1, U1 square. Then first row with second column, I get U1, U2, so on so forth. First row, third column, first row, fourth column, up to first row, nth column, U1 into UN. Then we multiply second row with the first column, U2 into U1. Second row into second column, U2 square. And second row up to nth column, U2 UN. In the same fashion, we can continue for nth row into first column, UN U1, UN U2 up to UN square. So now this is a matrix of order n cross n. It has n rows, n columns, n cross n. So this is the matrix U into U transpose. Now we have to take the expectation of this matrix. We have to take expectation. So if we have U into U transpose matrix, if we take expectation, now expectation of U into U transpose would be expectation of all these terms, expectation of U1 square, expectation of U1 U2 up to expectation of U1 UN, expectation of U2 U1, expectation of U2 square up to expectation of U2 UN, and we have to move in this way for nth row as well. Expectation of UN U1, expectation of UN U2 up to expectation of UN square. Now one thing is very clear, and because we have the assumption of CLRM that expectation of UI UJ if ing are different is 0. So all these terms which I am highlighting with blue color, they are 0. All of these are 0 because expectation of UI UJ is 0, because E UI UJ is 0. So all these blue terms, they will become 0, and E of UI square is variance of UI, which is sigma square. So all these terms which I have highlighted with yellow,
that means the diagonal terms, they will become sigma square. So this matrix becomes expectation of U into U transpose is sigma square 0 0 0 sigma square 0 0 0 sigma square. That means it is sigma square common into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So it is sigma square into I. So we have, you can see we have represented the two things, that these blue terms represent that expectation of ui uj when I is not equal to j is 0. That means there is no serial correlation. And homoscedasticity also, expectation of ui square is sigma square. So with this one notation of E U into U transpose is equal to sigma square into I have represented the two assumptions of CLRM. ओके तो अगर क्वेश्चन कहता है तो आप उसको कर सकते हैं. और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, दिस मैट्रिक्स विच वी हैव ऑब्टेन्ड, this matrix is called variance covariance matrix. Variance covariance matrix of disturbance term ui. It is a variance covariance matrix of disturbance term ui. क्वेश्चन कहता है derive the variance covariance matrix of disturbance term ui, या क्वेश्चन कहता है ये दो assumptions मैट्रिक्स फॉर्म में आप करके बताइए. तो ये सब करना है आपको. जो मैंने हॉरिजॉन्टली इसलिए चल रहा हूँ कि मैं वर्टिकली assumption लिख रहा हूँ, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टली चला गया. हमने ये जो assumption ली थी, इसको आपको, ये जो assumptions थी हमारे पास 2a 2b, इसको मैंने करके दिखाया आपको. तो पहले हमने u लिया, u ट्रांसपोज लिया, फिर से बता देता हूँ, u इंटू यू ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर u इंटू यू ट्रांसपोज का हमने एक्सपेक्टेशन लिया. इस एक्सपेक्टेशन में फिर हमने ये assumption जो थी CLRM की, इनकी वैल्यूज रिप्लेस की दोनों की 1 by 1, and we got this matrix, we got this result, u into u transpose. ये v लग रहा है, इसको मैं u बना देता हूँ. u into u transpose is sigma square into y. ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड. तो अभी तक ये assumption समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी. अब हम अगली assumption की तरफ बढ़ेंगे. assumption नंबर 3 यहाँ पे हम लोग लेंगे. अब हमने एक assumption लिया था that the explanatory variables x2 x3 up to xk are non-stochastic. Explanatory variables are non-stochastic. और यही बात हम यहाँ पे भी कहेंगे. ये जो हमारा वेरिएबल, जो मैट्रिक्स x आया था, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे the variable matrix x of order n cross k is a set of fixed numbers या नॉन स्टोकेस्टिक नंबर्स. तो यानी जो x के अंदर वैल्यूज आएंगी वो नॉन स्टोकेस्टिक नंबर्स हैं, वो रेंडमली नहीं ली जा सकती, दे आर नॉन रेंडम. बेसिक से assumption, कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है. ठीक है जी. एक और assumption है, assumption नंबर 4, और 4 एक की बजाय रादर दो assumptions हैं. पहली assumption ये है, there is no exact linear relationship between the explanatory variables, यानी there is no perfect multicollinearity. That is, there is no perfect multicollinearity. और एक और assumption है, वैसे बुक में आपने इंट्रोडक्टरी में बुक में नहीं लिखी हुई थी, मगर मैंने आपको बताया था, assumption लिखवाई थी मैंने आपको. 10 assumption लिखवाई थी, उनमें से एक ये भी थी.
मैंने लिखवाया था कि जो हमारा सैंपल साइज होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा होगा। अगर k वेरिएबल्स हैं तो n k से बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं चलेगा, ज्यादा चाहिए। द सैंपल साइज n is greater than the number of variables k। तो ये जो सैंपल साइज है n, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है k। अब k यहाँ पर टोटल वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और k माइनस वन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। x2 से लेकर xk तक k माइनस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो टोटल वेरिएबल हमारे पास k हैं। तो जो सैंपल साइज है इट शुड बी ग्रेटर देन k। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है x, इसकी रैंक आ रही है k। आप कहेंगे सर इससे कैसे पता चलेगा? भाई बताता हूं। फोर्थ है assumption, the variable matrix x of order n cross k has rank equal to k। ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स x है इसकी जो रैंक है वो k के इक्वल है। और इस लाइन के लिखने से ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं, ये दोनों अजम्पशन ले ली जाती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए हमने जो मैट्रिक्स x पढ़ा वो क्या पढ़ा है? x इज 1 1 अप टू n रोज, x2 1, x2 2 अप टू x2 n, x3 1, x3 2 up to x3 n, and till kth column xk1, xk2 up to xkn। इसका ऑर्डर है n into k। When I'm saying that its rank is k, what is rank? Rank is the number of linearly independent rows or columns whichever is less. So when rank, I'm saying rank is k, so it means two things. Number one, there are k number of independent rows or columns, but since k are the number of columns, so we can say there are k number of independent columns, and k is less than n, because rank is number of linearly independent rows or columns whichever is less। तो अगर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट कॉलम हैं, 5 इंडिपेंडेंट रो हैं, तो रैंक कितनी होगी? 3 होगी। If we have 3 independent columns and 5 independent row, एक जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इसको भूल जाओ अभी। एक जनरल मैट्रिक्स की बात करो, अगर एक मैट्रिक्स में we have 3 independent rows, we have 5 independent columns, then rank would be 3. Or if we have 3 independent columns and 5 independent rows, again rank would be 3. So rank is number of independent rows or columns whichever is less. So when I'm saying that rank is k, so k is less than n। एक बात समझ में आती है? जो हमने assumption सेकंड में ली थी that n is greater than k या k is less than s, ये बात यहाँ पे हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रैंक k है, इसका मतलब ये सब कॉलम्स आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे कोई मल्टी कोल एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता, एग्जैक्ट मल्टी कोलिनियरिटी होती, इसका मतलब जैसे x2 और x3 में होता, तो ऐसा बनता कि x3 इज से ट्वाइस ऑफ x2 या x3 इज x2 प्लस 5 फॉर दैट मैटर। उस सिचुएशन में ये x3 और x2 कॉलम्स जो होते दे वुड हैव बिकम प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल हो जाते और उनमें से एक कॉलम एलिमिनेट हो जाता और इसकी रैंक क्या रह जाती? अगर k कॉलम से तो k माइनस वन रह जाती, अगर x2 x3 में आपस में एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता। व्हेन आई एम सेइंग रैंक इज k, इसका मतलब सभी कॉलम्स में आपस में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो दोनों बातें इसी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दी। आप चाहे इसको लिख सकते हैं, आप चाहे लिख सकते हैं। When we are saying that the rank of matrix X is k, it means that we have k linearly independent columns. We have k linearly independent columns, which means there is no exact linear relationship between columns. There is no exact linear relationship between any two columns. That means no exact relationship between any two explanatory variables.
ऑल्सो सिंस रैंक इज k, दैट मीन्स k इज लेस देन n. ठीक है, बिकॉज रैंक इज number of columns or rows, number of independent columns or rows, whichever is less. So k is less certainly in that case. समझ गए? क्लियर है बात? तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, assumption बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक ही बात में आप एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट assumptions हैं. समझ गए बात को? क्लियर है? और अब एक और assumption लिया था हमने, और वो ये था कि u follows normal distribution with mean 0 and variance sigma square. U follows normal distribution with mean 0 and variance sigma square. और ये मैट्रिक्स नोटेशन में हम क्या कह सकते हैं? The column vector या column matrix कह लीजिए, the column vector U has a multivariate normal distribution. Column vector U has multivariate normal distribution. That means U follows normal distribution with mean 0 and variance क्या था? sigma square I. sigma square I, sigma square नहीं, sigma square I मैं बता चुका हूँ. sigma square I के वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स है. तो ये देखिए आपके सामने assumptions थी, हमने जो assumptions CLRM की पढ़ी थी पहले से, उनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया. ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड इनमें से हम इन assumptions को आगे चल के यूज करते रहेंगे. जब हम प्रूफ्स में जाएंगे तो डेरिवेशंस कर रहे होंगे, वहां पे इन assumptions को बार बार रिकॉल करेंगे. तो ये assumptions मैट्रिक्स फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए. तो अगर याद नहीं होंगी मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जब हम डेरिवेशन, जब प्रूफ्स में जाएंगे, तो प्रूफ्स में जब मैं रिकॉल करूंगा तो फिर आपको वापस पेज पलटने पड़ेंगे. इसलिए 5 assumptions हैं, ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप इनको एक बार याद कर लें. अगर आप इनको 4-5 बार लिखेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, 4-5 बार लिखेंगे, मैंने समझाया हर बात को, आपको एक्सप्लेन करा है, सिर्फ प्लेन वनीला फॉर्म में लिखवा नहीं दिया, मैंने हर चीज को एक्सप्लेन करा कि ऐसा क्यों है. ठीक है, लास्ट को शायद नहीं करा, तो देखिए यू क्या है, लास्ट को भी कर देता हूं, इसको भी क्यों छोड़ा जाए. यू है u1 u2 अप टू un, और हमने अभी पढ़ा एरर टर्म्स क्या फॉलो करती नॉर्मल. तो u का मीन है 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, u2 का मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ऐसे सबका मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. इन टोटलिटी हमने जब u का वेरिएंस निकाला था तो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आया था सिग्मा स्क्वायर i, और हमने फर्स्ट अजम्पशन में बोला था e ऑफ u 0 है, तो इसका मीन है 0 और वेरिएंस आ रहा है इसका सिग्मा स्क्वायर i, विच इज वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स. तो अजम्पशंस यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं. मैंने आपको आज की क्लास में फर्स्ट गियर डाल दिया है, जिससे हम गाड़ी चलाते हैं, फर्स्ट गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर डाल दिया, आपको समझा दिया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको OLS रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, OLS रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और हम एक आध क्वेश्चन भी करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे. वहां पर हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं करवाता हूँ आपको, लेकिन हम वहाँ पे OLS एस्टिमेशन करने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. होपफुली इतना आप समझ गए हैं. किसी के मन में अगर कोई क्वेरी है तो आप देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, ओके, थैंक यू.